Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. Today I came up with another DIY jewelry making idea using clay. So without wasting any time, let's start the video. So for the first DIY, I am making a sunflower locket, so that I am taking clay. Now I am making petals. एंड नेक्स्ट कुछ इस तरह से सारे पेटल्स को अटैच कर लेना है। Here I am using white acrylic color for the base and next I am using yellow, brown and black acrylic color. सेकेंड DIY में मैं और एक लॉकेट बनाऊंगी एंड क्ले से ही बनाऊंगी। सो फॉर दैट आई एम टेकिंग क्ले एंड नाउ आई एम मेकिंग सम पेटल्स एंड कुछ इस तरह से इसे भी अटैच कर लेना है। नाउ आई एम मेकिंग सम पैटर्न यूजिंग पेंसिल नाइफ। नेक्स्ट यूजिंग वाइट एक्रेलिक कलर फॉर द बेस एंड बेस कलर ड्राई होने के बाद मैं ये वायलेट कलर इसमें अप्लाई कर लूँगी। So now it's ready. थर्ड DIY में मैं क्ले से 2 फ्लावर बनाऊंगी। यहाँ पे मैं लॉकेट नहीं बनाऊंगी, हेयर पिन के ऊपर अटैच करने के लिए मैं 2 फ्लावर बनाऊंगी एंड फ्लावर मैंने बना लिया। एंड नेक्स्ट आई एम यूजिंग वाइट एक्रेलिक कलर फॉर द बेस एंड बेस कलर ड्राई होने के बाद हेयर आई एम यूजिंग येलो एक्रेलिक कलर एंड ब्लैक एंड नेक्स्ट फ्लावर को मैं वाइट ही रखूँगी, बस इसका मिडिल जो पार्ट है उसमें थोड़ा सा येलो एक्रेलिक कलर ऐड कर दूँगी। नेक्स्ट आई एम यूजिंग ग्लू एंड ग्लू की हेल्प से मैं इस छोटे फ्लावर को इस हेयर पिन के ऊपर ऐसे अटैच कर लूँगी। ओके, सो नाउ इट्स रेडी। फॉर द फोर्थ DIY आई एम मेकिंग अनदर पेंडेंट, सो डैट मैं क्ले को इस तरह से पहले कट कर लूँगी एंड नेक्स्ट मैं क्ले से इसके ऊपर ऐसे डिज़ाइन बना लूँगी। एक्चुअली हेयर आई एम मेकिंग अ रोज़ फ्लावर एंड रोज़ फ्लावर के जो लीफ होते हैं वो। क्ले प्रॉपर ड्राई होने के बाद हेयर आई एम यूजिंग वाइट एक्रेलिक कलर एंड बेस कलर ड्राई होने के बाद हेयर आई एम यूजिंग रेड एक्रेलिक कलर एंड ग्रीन एंड थोड़ा सा येलो एक्रेलिक कलर। सो इट्स नाउ रेडी एंड नेक्स्ट आई एम यूजिंग ग्लू एंड ग्लू के हेल्प से कुछ इस तरह से मैं इसे अटैच कर लूँगी। सो नाउ इट्स प्रॉपरली रेडी। So that's all about today's video. I hope you like this idea. If you do, please give this video a like and subscribe to my channel. Thank you so much for staying with me. I will see you all in the next video soon. Till then, take care. Bye.